राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन यहाँ आप सभी के उपस्थिति में हो रहा है। इस वेबिनार के लिए उद्घाटक के रूप में हमारे बीच उपस्थित एसपी कॉलेज ऑफ पुणे से प्रोफेसर डॉक्टर धोंडीराम जी पवार सर और आज के इस कार्यक्रम के लिए बीज भाषक के रूप में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परतूर से परम आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनकर जी टकले सर और इस राष्ट्रीय वेबिनार के विषय प्रस्तोता जो SNDT आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मुंबई से हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर किशोर जी कदम, इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर सदाशिव जी सरकटे सर, उपस्थित सभी अध्यापकगण, आज यह जो राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है उसका विषय मानव संसाधन वर्तमान स्थिति, अवसर और चुनौतियां। प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, यह संसाधन के दो प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा मानव संसाधन आज बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी देश का अगर विकास हमें देखना है तो उस देश में जो मानव संसाधन है, ह्यूमन कैपिटल जो है वहां का ह्यूमन कैपिटल जितना अच्छा होगा उतना वह देश प्रगत होगा। आज हम देखते हैं इजराइल जैसे देश को, जहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी वह देश दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? इसकी वजह यही है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वहां का, मानवीय संसाधन जो है वहां का बहुत अच्छा है। और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, इसको लेकर इसके सामने भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, मानव संसाधन को लेकर इसके अवसर कौन से हैं और चुनौतियां कौन सी है भारत के सामने, कि जो मानव संसाधन है, मानव जो पूंजी है, उसको लेकर यहाँ बहस होने वाली है। कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं और स्वास्थ्य से बड़ी कोई दौलत नहीं और जो कौशल्य है उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। यदि ये तीन चीजें किसी देश के पास होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल्य, ये तीन चीजें जिस देश के पास अधिक मात्रा में होगी, भले ही उस देश में प्राकृतिक संसाधन कम हो, पर वह देश तरक्कियों को छुएगा और अपनी तरक्की हासिल करेगा। यह दुनिया में उदाहरण, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम विकास को पा सकते हैं। शिक्षा वह चाबी है दुनिया के विकास की, हर विकास का ताला खोला जा सकता है। इसीलिए इसको लेकर यहाँ बहस होने वाली है। मानव संसाधन जो है उनको लेकर इसका उद्देश्य क्या है, इस राष्ट्रीय वेबिनार के पीछे लेने के पीछे इसकी भूमिका क्या है, इसको मैं विशद करने के लिए इस वेबिनार के संयोजक मेरे मित्र डॉक्टर अभी वो जुड़ेंगे 2 ही मिनट में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आज का विषय है वह मानव संसाधन वर्तमान स्थिति, अवसर और चुनौतियां, इसको लेकर यहाँ बात होने वाली है। इस कार्यक्रम का जो आगाज है, उद्घाटन है, वह एसपी कॉलेज पुणे से हमारे बीच उपस्थित प्राध्यापक डॉक्टर धोंडीराम पवार जी करेंगे। बीज भाषक के रूप में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परतूर के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर दिनकर जी टकले सर इस राष्ट्रीय वेबिनार
का बीज भाषक के रूप में अपना मंतव्य देंगे और इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए विषय प्रस्तोता के रूप में हमारे बीच उपस्थित एसएनडीटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मुंबई से डॉक्टर किशोर जी कदम सर। अभी सर बीज भाषक जी जो है वह कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चिंचोली लिम्बाजी कन्नड़ तहसील में है, जो छत्रपति संभाजी नगर में आता है। यहाँ पर वे प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। यहाँ पर इस कार्यक्रम की भूमिका को विशद करने के लिए, इसके पीछे का उद्देश्य बतलाने के लिए मैं कला एवं विज्ञान महाविद्यालय शिवाजी नगर गढ़ी के अध्यापक एवं राष्ट्रीय वेबिनार के संयोजक अध्यापक डॉक्टर शिवाजीराव काकड़े को आमंत्रित करता हूँ और वे इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें, इस कार्यक्रम के पीछे की भूमिका को विशद। Very good morning to all the dignitaries and participants who have joined this national webinar. Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandal, Arts and Science College, Shivajinagar, Gadi, District Bid, affiliated to Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, Department of Economics, organizing one-day national webinar on status of human capital in India, opportunities and challenges. Inaugurator of this national webinar is Dr. Dhundiram Pawar sir, who is a Management Council member, Savitribai Phule, Pune University, Pune, and working as an Associate Professor, Department of Economics, Sir Parshuram Bhau College, Pune. Keynote address for this webinar is organized of respected Professor Dr. Dinkar Takle sir, who is working as a principal, Arts and Science College, Chincholi Limbaji District, Chhatrapati Sambhajinagar, who is well known as an academician and administrator in our field. Resource person for this national webinar is Dr. Kishore Kadam, who is working as Associate Professor and Head, Department of Economics, SNDT College of Arts and SCB College of Commerce and Science for Women, Churchgate, Mumbai. He is a good researcher, expertise in different research software and a studious personality. Chairman of this national webinar is our respected principal, Professor Dr. Sadashiv Sarkate sir. Friends, today we are discussing on the topic in this national webinar, that is status of human capital in India, opportunities and challenges. It is emerging issue in today's economic world. It is one of the most significant concepts of labor economics. Human capital is defined as the resources, skills, knowledge and qualifications that are available and acquired by individuals to maximize their employability. A healthy, educated and productive labor results in long-term economic prosperity. Investing in people through nutrition, healthcare, quality education, jobs and skills help develop human capital, and this is a key to ending extreme poverty. Empirical literature establishes the positive impact of human capital on productivity, technology adoption, and innovation. The concept of human capital is relatively more important in labor surplus countries like India. These countries are naturally endowed with more of labor due to high birth rate under the given climate conditions. The surplus labor in these countries is the human resource available in more abundance than the tangible capital resources. This human resource can be transformed into human capital with effective input
of education, health, and more value. We are discussing the topics in this webinar are the role of human capital on economic development, determinants of human capital, importance of human capital formation, current status of human capital in India, and what are opportunities and challenges before Indian human capital. Once again, I heartily welcome of all the dignitaries and participants who have joined this webinar. धन्यवाद। आपने इस राष्ट्रीय वेबिनार के पीछे की भूमिका को विशद किया। मानव संसाधन, मानव पूंजी जो है वह कितनी महत्वपूर्ण है, उसके सामने कौन से चुनौतियां हैं, भारत में मानव संसाधन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस आने वाले दिनों में इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इसको लेकर यहाँ बहस होने वाली है। इस बात को आपने विशद किया, इसके पीछे की भूमिका को विशद किया। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक, जिनके करकमलों से इस राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन होने जा रहा है, वे एसपी कॉलेज ऑफ पुणे से हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर ढोंडीराम जी पवार सर। एक अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में पिछले 16 सालों से वे अध्ययन और अध्यापन का कार्य निरंतर उनका जारी है। वे अध्ययन प्रिय अध्यापक के रूप में उनकी ख्याति है। साथ ही पुणे विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई पुणे विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन परिषद के वे सदस्य है वर्तमान में, हाल ही में। साथ ही अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल के वे सदस्य है। बिरला कॉलेज से के भी वे अध्ययन मंडल के सदस्य हैं अर्थशास्त्र के। आधुनिक कॉलेज ऑफ मुंबई, यहाँ के भी वे अध्ययन मंडल के सदस्य हैं। 4 किताबें इनकी प्रकाशित हुई है। 30 से अधिक शोधालेख इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 20 से भी अधिक शोधालेख इन्होंने आलेखों का वाचन इन्होंने संगोष्ठियों में, राष्ट्रीय वेबिनारों में किया है। वे एक शोध निर्देशक के रूप में भी काम करते हैं। उनके शोध निर्देशन में पीएचडी का एक शोध छात्र बाहर निकला हुआ है, 4 अभी कार्यरत हैं। एमफिल के 5 शोध छात्रों ने इनके मार्गदर्शन में एमफिल की उपाधि हासिल की है। इन्होंने कई जगह पर रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। आज वे इस राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटक के रूप में हमें संबोधित करने के लिए उपस्थित है। मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि सर, आप इस राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन आपके करकमलों से करें और हमें संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर ढोंडीराम जी पवार सर। में उपस्थित सभी मेरे मित्र डॉक्टर शिवाजी काकड़े और अभी ही सूत्र संचालन करने वाले मेरा जो परिचय दिया है, तो परिचय के तौर पर मैं धन्य हूँ। मेरे फ्रेंड कदम सर, माननीय प्राचार्य टकले सर और सभी साथियों, आज का जो विषय है वेबिनार का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात से वो महत्वपूर्ण है कि श्रम जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर है, उसमें से श्रम जो होता है, लेबर जो होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब श्रम क्वालिटेड होता है तो ही प्रोडक्शन क्वालिटेड होता है, प्रोडक्टिविटी क्वालिटेड होती है और देश के आर्थिक विकास में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमारे भारत जैसे देश में, जो भारत श्रम प्रधान देश है,
श्रम की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटेड श्रम जो है होना बहुत ही जरूरी है। अभी ह्यूमन कैपिटल जिस देश का क्वालिटेड है और बड़ा है, उस देश का डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हुई है। ये हम देखते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का जो विषय है, ये मेरे तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहा है। जग बदल रहा है, देश बदल रहा है। इस स्थिति में हमारा ही ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें इम्प्रूव होनी जरूरी है। आज करंट का जब हम ये देखते हैं ह्यूमन कैपिटल में, जो ह्यूमन कैपिटल यानी अब बताया डेफिनेशन काकड़े सर ने और सूत्र संचालन करने वाले मेरे सहयोगी, कि ज्ञान, कौशल्य और आरोग्य, इस बात पे ही ह्यूमन कैपिटल जो है ये महत्वपूर्ण होता है और क्वालिटेड होता है। जिस देश में ये तीन बातें जो है, इससे संलग्नित जो बातें होती है, वो जो वो ज्यादा से ज्यादा होती है, वह वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है अच्छा होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। जब जिस देश का ह्यूमन कैपिटल अच्छा होता है, उस देश में प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने से डेवलपमेंट भी, उस देश का डेवलपमेंट भी बढ़ता है। नजदीक नजदीक के समय में जो है ह्यूमन कैपिटल में भी बहुत सारा चेंजेस जो है आ रहा है। अभी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, यानी इस स्थिति में ह्यूमन कैपिटल में भी वर्ल्ड लेवल पे जो है तो हमारी ग्रोथ होनी जरूरी है। आज देखा जाए, वर्ल्ड बैंक ने जो इसका सर्वे किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर, तो उसमें 135 देश का जब सर्वे किया, उसमें हमारा जो HDI है वो बहुत ही कम है। मुझे लगता है 116 के रैंक में हम 2023 के इसमें आज खड़े हैं। तो ये हम जो इकोनॉमिक्स के सभी लोग, ये सोचना चाहिए या ये अभ्यास करना चाहिए, ये संशोधन करना चाहिए कि बाबा ये कैसा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कैसा बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट सॉरी ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसा बढ़े। और ये बढ़ाने के लिए हमारा रिसर्च जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है, हमारा अभ्यास जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अभी जो काकड़े सर ने या महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने जो है ये वेबिनार रखा है, इस वेबिनार का मुझे लगता है बहुत ही फायदा जो है सभी लोगों को होगा। और आज दिन भर या जो जिस समय तक ये चलेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें इसमें ह्यूमन कैपिटल के तौर पर होगी। स्पीकर यानी स्पीकर है आज के की नोट एड्रेस करने वाले हमारे मित्र टकले सर और कदम सर, ये इस पे ज्यादा से ज्यादा गौर से चर्चा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज के वेबिनार का उद्घाटन औपचारिक तौर पर हो गया, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ काकड़े सर और प्रिंसिपल और उस कॉलेज के सभी महानुभावों को। और मैं अभी यानी रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद, आवाज आ रही है? हाँ, मैं अरे धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपके विचारों को। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे हैं। इस राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन आपने किया। आपने इस बात का जिक्र किया कि मानव संसाधन को कैसे बढ़ाए, और मानव संसाधन में तीन बातें जो महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन के मुख्य तीन जो स्रोत है, उस स्रोतों का भी जिक्र आपने यहाँ पर किया है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कौशल्य। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य और कौशल्य, इन तीनों के बलबूते पर ही कोई देश तरक्की कर सकता है, किसी देश पर राज कर सकता है। जहां मानव संसाधन जो है
प्राकृतिक संसाधनों से अधिक हो तो वह देश भले ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी वह अपने आप को निखारेगा, सुधारेगा, विकास को आगे बढ़ाएगा। आज हम देखते हैं कि भारत के पास मानव संसाधन जो है वह विपुल मात्रा में होने के बावजूद भी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और यहाँ कौशल्य का स्तर कैसा है, इस बातों की और भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। भारत के सम्मुख खड़ी है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और कौशल्य को लेकर, इस और भी आपने हमारा ध्यान इंगित किया, इसलिए मैं आपका महाविद्यालय की ओर से और अर्थशास्त्र विभाग की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के बीज भाषक जो प्रधानाचार्य है कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चिंचोली के सर, अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में पिछले लगातार 33 सालों से कार्यरत है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परतूर में सर ने लगभग 32 साल का अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन और अध्यापन कार्य किया है। हाल ही में वे अभी चिंचोली महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हुए हैं। सर के मार्गदर्शन में 12 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि हासिल की है। सर ने अनेक कई समितियों पर काम किया है। महाविद्यालय की आईक्यूसी समन्वयक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्रों में, वेबिनारों में सर ने अपना मंतव्य दिया है। साथ ही सर ने मराठवाड़ा अर्थशास्त्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। हाल ही में वे मराठवाड़ा अर्थशास्त्र परिषद के कार्यवाहक के रूप में कार्यरत है। सर एक अध्ययन प्रिय और छात्र प्रिय अध्यापक के रूप में सर की ख्याति है। सर मितभाषी है। सर कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं। इसीलिए आज हमारे मित्र ने सर को बीज भाषक के रूप में यहाँ पर बोलने के लिए सर को आमंत्रित किया है। और मैं आपके और उनके बीच में अधिक समय न लेते हुए आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनकर जी टकले सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, अपने विचारों से हमें संबोधित करें। आदरणीय टकले सर जी। Thank you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, all the participants. National webinar on status of human capital in India, opportunity and challenges. This seminar organized by Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandals, Arts and Science College, Shivaji Nagar, Gadi, District Bid. The present seminar is very important for our labor economics, for our country's population. The seminar is organized today. Recently inaugurated Dr. Dhoniram Pawar sir, MC member of Savitribai Phule University Pune, has explained the status of human capital in India and its challenges. The resource person, our Dr. Kishorji Kadam sir, Professor and Head, SNDT University Mumbai, Chairperson of the webinar and the Principal of Arts and Science College, Shivaji Nagar, Professor Dr.
Sadashiv Sarkate sir, convener and my research student, head of the department economics, Dr. Shivaji Kakade sir, Dr. Yashwantkar sir. Today we are discussing the main important topic of human capital and its role in the development of our economy as well as in the development of our society and state level various activities. Human capital and physical capital, these are the two separate terms. In term human capital entered in the lexicon of economists much after the term physical capital. Human capital is very crucial role in the development of social attitude of any country. The capital in machineries or investment in machineries is related to physical capital, but the working efficiency of labor, working efficiency of productivity of 4 factors are different. Human capital is related to human quality, skills, and knowledge. These capitals is very important for any developing countries like Indian economy. The efficiency of human capital is depend on various important factors such as education or knowledge, health, and market structure of labor market structure, as well as transport cost of labor or skilled labor. In India, human capital of as compared to world capacity, ADI index is very low in India. There are many factors responsible for this purpose. But now we are discuss what is the position of human capital index in the world. India's position is very low. According to 2022-23 HCI index, that means human capital index, India's rank in the World Bank's human capital index as 2023 is 116 out of 195 countries. It means our human capital index is very low as compared to other country in the world. For example, human capital measure in index measure in 0 to 1. 1 is the good quality index and 0 is the bad quality. In the rank of 2023 human capital index in the world, first rank acquired Singapore and its score is 0.88. Thereafter, Hong Kong second rank, Japan third rank, South Korea fourth rank, Canada fifth rank, Finland sixth rank, United Kingdom 11th rank, as well as United States, that means America 35 rank, and India is 160 ranks, and India's score of index 0.49. Our index is as compared to other Asian countries.
improvement of our human capital index is needed due to our index is good. Thereafter, our productivity, skills, and labor force is good utilized for our development of country. Sri Lanka index is much better than India. China's index is 65.65. Our index is very low. So what is the reason of our index is very low? There are many challenges, reasons, and this index is very low. What is the main factors are responsible for this index? This some important indicator is considered for this low of index our country. Which indicators are responsible for this low index? These indicators is relating to educations as well as health and size of labor market or availability of working labor in the country. HCI complementary index is very important because mortality rate, participant rate in organizing learning, DTP vaccination rate, child mortality rate, primary school completion rate, net school enrollment rate, youth literacy, youth not employed education, female labor force participation in the country, life expectancy of the birth, adult unemployment rate. These are the complementary indicators of human capital index. This is more important. And if our human capital index is improved, then these indicators improve is needed. In India, this is more important. There are more important two major factors, two major indicators. That indicators are number one, health, public health as well as private health. Health is more important. If health is good, our labor force, our labor quality is good, and there, as a result of this, our productivity is increased. But in our health indicator, we are compared to all other countries or all other developing countries, our health indicator is low as compared to developed countries. In the health education, health indicator, nutritious value is more important because good nutritious is resulted in capacity of works. If our capacity of work is good, our productivity work is increased as well as our productivity and production will increase. Second, more important factor in health indicator, life expectancy, life, quality of life. Quality of life is depend upon our nutritious foods, our health, good facility, as well as our life expectancy is depend upon our happiness status of the country. But our country, these various sub-factors are low as compared to other developing country as well as our developed country. Our indicators, our indicators
mortality rate per 1,000 live births is 19. This rate is increased as compared to other developed countries. But this rate is controlled, good control. If we are trying to good control mortality rate, then affected our life will be increased. Participant rate in the organizing learning 85%. Vaccination rate, DTP vaccination rate 93%, as shown in the 2022-23 Human Capital Index. Child mortality rate per 1,000 child age below 5 is 4. Primary school completion rate 95. It means that in the recent data, near about 3 to 5% child out of education system. This is the obstacles in the way of our good labor force, in the way of our labor productivity rate, as well as our working force. Child mortality is targeted. Child mortality is near about less than 0 to 1%. Primary education school enrollment rate, net school enrollment rate is 87%. That means near about 13% of our enrollment is lost. Youth literacy rate is 95%. These rates are affected in our human capital, and human capital is good quality. There is the result of this. Our gross domestic product and net domestic product will be good. In the human capital formation, there are various problems in our country. There are various challenges in the country. Some most important challenges we will discuss in the recent webinar. For example, growth in population is the major problem in our India. Because of population growth is very fastly as compared to rest countries, rest world in the world. Growth in population, we are taking number one position. We are the number one position population in the world. After before 10 years or 20 years ago, China is the most populated country in the world. But now recent position, India is the most populated country in the world. And this is the main problem, because all the facilities available in the country is decreased as compared to population growth. Our facility is increased as compared to population growth. Even facility growth is more than population growth. But in our country, our facility is lower as compared to growth of population, and as a result, growth of population, all the facility is not so good by the government as well as by the other NGOs, and these are affected our human capital. Second important factor of the human capital affected, gender equality. Our population, there are two main factors, there are two main dividation is more important. These are
female population of the country and male population of the country. Male population and female population, these are the two workforce in our country. But in India, female participation in the workforce is less as compared to male, and gender equality is essential for our increase of human capital. These are the challenges. These are the challenges: population, gender equality, as well as long process of our capital generation formulation. Regional disparity is the third most important factor for increase human capital. In our country, some states are developed and other states are less developed. And regional disparity in the state, between the state, regional disparity is increased day by day in the recent year. Regional disparity, that means, for example, in the state of Maharashtra, Marathwada, Vidarbha, and rest of Maharashtra, these are the three main component, main region of our development, Maharashtra. But the three regions are not same development stage, because of Vidarbha and Marathwada is development process is lower as compared to other state of Maharashtra. This regional disparity is the main factor for development of inclusive development of our state as well as our country. Second important challenge of the human capital, good capital availability, is insufficient on-job training of our workforce. On-job training or on-job skill is very important for the increasing of good human capital. Skill labor, if in our country skill level is sufficient available, then we are getting more and more productivity, more and more production in our nation. And if our production is increased, that will affected, or our export import trading is increased. Therefore, on-job training or school training, in the college job training is very important. In the recent year, National Education Policy 2020 is focused on skill development of youth, skill development of your training. This is more important in our graduate student. On-job training as well as skill courses training is very crucial role in the increasing of our skill labor and increasing of your employability rate. This, but up to this date, our on-job training is less as compared to other developed countries. Next important challenge of the human development index or human development position in our country is high poverty level. Our poverty level is very big as compared to developed country as well as developing countries. Poverty is the main obstacle of our growth of any family, growth of any region, growth of our society. Poverty line, that is very important for the economic development process of our state or of our country. These are very high level. The in human capital is not so good because of poverty
in the any family is not acquired any good quality nutritious food, not acquired in good quality health as well as other facilities. Therefore, good quality labor force is essential for our human capital, and human capital index will be increased if the available of good quality as well as skill force in the country. And then if available of our country's skill labor, but we are not adjust skill labor in the our manufacturing process, then this skill labor will be out of our country. That means brain drain is the main obstacles, main challenges for our development of country. Brain drain in India is very highly growth, and due to this growth is not good for our country. If available of our opportunity in the use of this good quality labor force, therefore this labor is for our development of economy. Next challenge of our human capital is for low academic standard. जो हमारा स्टैंडर्ड है, अभी शिक्षा का स्टैंडर्ड अभी जो अपने देश में अभी चल रहा है, उसका स्टैंडर्ड भी स्तर भी बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब हम हमारा स्टैंडर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे तो आप अच्छा क्वालिटी का लेबर फोर्स अवेलेबल करेंगे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, ये अपने स्टैंडर्ड लेबर फोर्स उपलब्ध होने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड, अभी महाराष्ट्र का स्टैंडर्ड का अब जिक्र कीजिए, और उससे भी हमारा उच्च शिक्षा स्तर का स्टैंडर्ड अभी बहुत ही लो स्टैंडर्ड होने की तरफ जा रहा है। जब हम हमारी शिक्षा की बात करें, हम अभी इस पोजीशन पे है जहां हम बिहार को बताते थे हमारा बिहार जैसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बिहार का एजुकेशन अपने एजुकेशन के स्तर पे बहुत क्वालिटी हो रहा है। हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हमारे प्राध्यापक, अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल और जो भी हायर एजुकेशन के स्तर पर अभी काम कर रहे हैं, हमारा स्तर भी, हमें ये इवैल्यूएशन होना जरूरी है कि हम इस हायर एजुकेशन के तहत हमारे बच्चों को, हमारे कॉलेज लेवल स्टूडेंट को अच्छी तरह की स्किल ट्रेनिंग दे रहे, या हम हमारे हिसाब से काम करने में कुछ स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। और यह हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड जब तक हम बढ़ा नहीं सके, तब तक हमारा ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू हम आगे नहीं ले सकते। हमारी ह्यूमन कैपिटल जब तक स्टैंडर्ड हो जाएगी, तब हमारा प्रोडक्शन, देश का उत्पादन, देश की जो प्रति व्यक्ति आय, वो भी बढ़ाने की कोशिश हम इस माध्यम से कर सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट बाहर जाता है, उनकी क्वालिटी जब तक ट्रेनिंग हम अच्छी तरह से ले नहीं सकते, तब तक हमारा इस क्वालिटी का मतलब क्या है, हमारा इस क्वालिटी पॉपुलेशन जब तक आता नहीं, तब तक हम हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी तरह से बढ़ा नहीं सकते। इसके साथ ही अभी जो चुनौतियां इस ह्यूमन कैपिटल की बात
करने के बाद पता चलती है वो है हम हमारे इस शिक्षा नीति में, हमारे इस उत्पादन क्षेत्र में हमारा जो साइंस का योगदान है वो भी बढ़ाने की जरूरी है। विक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी जो भी इनोवेटिव प्रैक्टिस इन द साइंस एज वेल एज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग sector. These are more important. Science role in the innovation is very, very important for our manufacturing sector. Therefore, technology development is essential. Science innovative practice is essential in our higher education system. That means in our engineering sector, medical sector, traditional graduate sector, as well as other higher level technology sector is more important, proactive for our increasing growth of productivity, increasing for our development sector. Lack of proper manpower planning, this is the other challenges of our human society. अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे इस क्षेत्र में जो मैन पावर प्लानिंग है उसकी सही नियोजन होना जरूरी है। हमारी इतनी मैन पावर होने के बावजूद हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। हम जब तक अवेलेबल मैन पावर को सही दिशा में व्यस्त न कर सके तब तक हमारा देश का उत्पादकीय क्षेत्र अच्छी तरह से आगे नहीं जा सकता। इसलिए मैन पावर is more important, planning is more important for human capital of our country. In the summarize, we are summing that 3 pillars support the human capital in our country. Number 1, survival rate. Number 2, schooling enrollment. And number 3, health education or health status of our country. Survival is more important. Life expectancy in India is now near about 67 years of age. There is need to increase life expectancy. There is need to increase in school enrollment. In the recent, in our country, recent education policy 2020 will be implemented in the Maharashtra in the next academic year. And the objective of this NEP 20 is one more important objective: school enrollment rate increase. Near about 2046 school enrollment ratio, 100% ratio targeted. Therefore, the school enrollment rate is very important for the growth of quality of human capital. इस सेमिनार में जो भी बातें अभी मैंने बताई, इसके लिए सभी सहभागी और सभी अध्यापक, सभी जो शिक्षा में व्यस्त है, ऐसे सभी लोगों को 3 फैक्टर्स, 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण बताना जरूरी है।
जब तक ये 3 बातें हमारा देश इस पे ध्यान नहीं देगा, तब तक हमारा गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। इसमें स्कूल का योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें आरोग्य, जिसको हम हेल्थ बोलते हैं, इसका योगदान महत्वपूर्ण है। स्कूल और हेल्थ जब तक अच्छा क्वालिटी का किसी भी देश को नहीं मिल सकता, तब तक उस देश का ह्यूमन कैपिटल सही तरफ से, इस देश का ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरफ से नहीं जा सकता। इसीलिए स्कूल को और हेल्थ को अभी भी हमारे इस विश्व में ऐसे बहुत देश है जहाँ स्कूल और हेल्थ मुफ्त में दी जाती है। हमारे देश में उसका विपरीत दिखाई दे रहा है। हमारे देश में क्या है, जब हम गुड क्वालिटी एजुकेशन किसी फैमिली का देना चाहते हैं तो उसको गुड क्वालिटी पेमेंट करना पड़ता है। और इस हमारे देश में हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है, दरडई, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम जब हमारा कम हो तो हम ज्यादा फीस देके गुड क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को दे नहीं सकते। इसीलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम सभी भारत के सभी स्टूडेंट को फ्री शिक्षा और गुड क्वालिटी एजुकेशन, इसके तरफ अपना ध्यान देना जरूरी है। इसके बावजूद हम गुड हेल्थ, हमारा जो पब्लिक हेल्थ है उसकी क्वालिटी बढ़कर और उसका जो स्टैंडर्ड है उसका अभी अच्छा करना जरूरी है। जब हम अच्छा शिक्षा और अच्छे हेल्थ जब तक हम नहीं देते, तब तक हमारा जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, वो हम अच्छे तरह से हमारा प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा सकते। इसीलिए हम जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, इसके जो हम देखें तो हमारे जो प्रति 1000 डॉक्टर का रेशियो है, अमेरिका में 2.6 डॉक्टर है, इटली में 4 डॉक्टर है, स्पेन में 3.9 है। हमारा नियर अबाउट 1 डॉक्टर प्रति व्यक्ति प्रति 1000 के हिसाब से। डॉक्टर की संख्या बढ़ाना जरूरी है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ाना जरूरी है। एक हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन, वो ये 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम हमारा देश का, इस सरकार का, आने वाले सरकार का ध्यान इस 2 फैक्टर का की तरफ से जब तक नहीं जाता, तब तक हम ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरह से नहीं बढ़ा सकते। हम ह्यूमन कैपिटल की इंडेक्स में इंप्रूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम ये सभी फैक्टर को जब अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हम इस वेबिनार के माध्यम से सभी का ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहते हैं कि जब तक हम गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी हेल्थ एज वेल एज गुड क्वालिटी स्किल, ये तीनों फैक्टर जब तक हम बढ़ाएंगे, जब तक इसको ध्यान देंगे नहीं, तो हम हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरह से हमारे देश के लिए, हमारे इस राज्य के लिए एज वेल एज हमारे वर्ल्ड के लिए हम गुड की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। इस वेबिनार में मैं ये 3 चीजों को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, मीन्स गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी हेल्थ एज वेल एज स्किल फैसिलिटी ऑफ आवर कंट्री। इस सेमिनार में जो स्टेटस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस जो भी ऑर्गेनाइज किया है, इस ऑर्गेनाइजिंग क्षेत्र में जो काम करने की सर्व महत्वपूर्ण और हमारे इस क्षेत्र में एजुकेशन के बारे में जो योगदान देते हैं, ऐसे सभी अभी अध्यापक, प्रिंसिपल, इसका भी योगदान सर्व महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार वेबिनार में आयोजन जो किया है
जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज गढ़ी डिस्ट्रिक्ट बीड़, इसके प्रधानाचार्य और हमारे मित्र डॉक्टर सदाशिव जी सरकटे सर, इन्होंने जो मुझे इस वेबिनार में की नोट स्पीकर चे जो अभी संधि दी, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। इस एज वेल एज इस वेबिनार में मुझे जो संधि दी, इसमें महत्वपूर्ण रोल जो रहा है वो हमारे रिसर्च स्टूडेंट और इस सेमिनार में जो जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडल गेवराई में जो इकोनॉमिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शिवाजी काकड़े सर, डॉक्टर यशवंतकर सर, दोंडराम पवार सर और सभी पार्टिसिपेंट जो इस सेमिनार में शामिल हुए, जो इन्होंने इसमें अभी तक जो अपना योगदान दिया, सभी जनों का मैं वोट ऑफ थैंक्स बोलता हूँ और मुझे जो संधि दी इस कॉलेज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत बड़ी बात की है कि सर किसी भी देश का आर्थिक विकास करना हो या किसी भी देश को तरक्की की ओर लेकर जाना हो तो वहाँ का ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को बढ़ावा देना जरूरी है। बेहतर शिक्षा और अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर कौशल्य यदि हो तो वहाँ का ह्यूमन कैपिटल अच्छा होता है और वहाँ की मानव पूंजी अच्छी हो। और जब तक मानव पूंजी जो है, मानव संसाधन जो है अच्छा नहीं होगा, वह देश आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा और तरक्की को छू नहीं पाएगा। आपने इस बात की ओर भी हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है कि सर आपने जो इंडेक्स है वर्ल्ड का ह्यूमन कैपिटल का, उस बात को, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी आंकड़ों को यहाँ पर बताया है और भारत का जो स्थान है वह 116वां रैंक भारत का ह्यूमन कैपिटल के रूप में आता है। इस बात की ओर इंगित करते हुए ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देने की बात आपने की है सर, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम जब तक हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएंगे नहीं, इसको यहाँ के मानव को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे और अच्छा सा अच्छा कौशल्य नहीं दे पाएंगे, तब तक हम आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे, हम उन बुलंदियों को छू नहीं पाएंगे जो छूना चाहिए। क्योंकि बुल वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क बहुत मायने रखता है। इस बात की ओर भी आपने इंगित किया है, क्योंकि जो दिहाड़ी काम करने वाला मजदूर है और उसको मिलने वाली जो मजदूरी है, वह मजदूरी जो स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति होता है, उस बुल वर्क से दिहाड़ी काम करने वाले से कई गुना अधिक होता है। क्योंकि उसका कारण ही यही है कि स्मार्ट वर्क यह बहुत मायने रखता है। आज जिन जिन राष्ट्रों ने प्रगति की है, हालांकि वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की भले ही कमी हुई होगी, परंतु जहां मानव संसाधन अधिक विकसित हुआ है और वहां अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की गई, अच्छा सा अच्छा स्वास्थ्य दिया गया और अच्छा सा अच्छा कौशल्य देकर मजदूरों को कौशल्य पूर्ण बनाया गया, वह देश, वह राष्ट्र निश्चित ही तरक्की को छुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है, हमें इसकी ओर गंभीरता से ध्यान आकृष्ट किया है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस तरह से सुधार लाना जरूरी है और हमारे देश में जो स्वास्थ्य की अवस्था है, 1000 व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर हमारे यहाँ, यह हमारी स्वास्थ्य की सुविधा है। इस बात का भी जिक्र आपने किया सर कि बाहर के राष्ट्रों में, बाहर के देश में कितनी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, वह हमारे देश में नहीं है। जहाँ 2 व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर बाहर देश में है, यहाँ भारत में अपने 1000 व्यक्तियों के बीच एक डॉक्टर यहाँ मुहैया करा जाता है। इसीलिए हमारी जो निजी स्वास्थ्य की सुविधा है और पब्लिक जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और अन्य राष्ट्रों की तुलना में इसको हमें सुधारना होगा। इस बात की ओर भी आपने इंगित किया है। मैं आपकी बात को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ये दुनिया जब चलती थी
वह पहले मसल पावर पर चलती थी, शरीर के ताकत पर चलती थी। उसके बाद ये दुनिया मनी पावर पर चलने लगी। लेकिन आज जो ये दुनिया जो है वह मैन पावर जो है, उसको हम कहेंगे ज्ञान के पावर पर ये दुनिया चल रही है। हमें भी इसमें जुड़ना होगा। अब हमारा भी देश, हमारे देश को भी इस मैन पावर को जो है वह ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके बीज आपने बोए हैं, उसको हम किस तरह से इस देश को अगर विकसित करना है तो इन तीन बातों पर आपने जो बल दिया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या उचित प्रशिक्षण देकर कौशल्य बढ़ाने की बात हो, यह बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी है। और ये निश्चित ही यहाँ पर अर्थशास्त्र के अध्येता लाभान्वित होंगे। मैं आपका महाविद्यालय की ओर से और अर्थशास्त्र विभाग की ओर से उपस्थित सभी की ओर से मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद इस राष्ट्रीय वेबिनार के विषय प्रस्तोता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे मित्र डॉक्टर किशोर जी कदम सर, कदम सर एसएनडीटी आर्ट एंड साइंस कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग में क्षेत्र समन्वयक के रूप में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही उनके 30 से भी अधिक शोधालेख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। सर ने यूजीसी द्वारा प्रकाशित जो किताबें हैं, शोधालेख है, उसमें भी एकल लेखक, मुख्य लेखक, सहलेखक के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। साथ ही सर को सन 2017 में मराठवाड़ा अर्थ परिषद ने इन्हें उत्कृष्ट शोध निबंध के लिए उनके निबंध को उत्कृष्ट शोध निबंधक के रूप में नवाजा गया है। सर ने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राष्ट्रीय वेबिनार और चर्चा सत्रों में अपना मंतव्य दिया है और एक छात्र प्रिय अध्यापक होने के साथ साथ सर एक शोध निर्देशक के रूप में भी कार्यरत है। सर के मार्गदर्शन में 4 शोध छात्र पीएचडी का शोध कार्य कर रहे हैं। सर के बीच में और आपके बीच में मैं अधिक समय न लेते हुए इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए विशेष विषय प्रस्तोता के रूप में डॉक्टर किशोर कदम सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर कदम सर जी। Thank you, Yashwanth sir. I hope I am audible. Yes, sir. Yes. Yes. Dear Professor, give me access. I have to share my PPT. Professor. Hello. Yes. Screen share. Professor, make me as a co-host so I can share my PPT. Sir, you are already co-host. Okay. So, shall I share my PPT? Share your PPT, sir. I hope I am sharing my PPT properly. Professor, is it correct? Hello. Professor.
Okay, sir. Okay, sir. Yes, Sir. I'm Yes, okay. yes. Okay, okay. Thank you very much. Good morning, good afternoon, one and all. Respected chairperson of this one day national seminar, Principal Sarkati sir, inaugurator of this seminar, Dr. Dhondiram Pawar sir, and keynote speaker and my mentor guide, respected Principal Dr. Dinkar Takle sir, and all these participants in this webinar. I would like to thanks to all of you because we are discussing today very important topic, and that is directly or indirectly which is related to us even also, and that is human capital. So when we think about the human capital, as Dr. Takle sir said, it is very important to know what is the status of our human capital in India is becoming very important. And due to that, I hope Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandals, Arts and Science College organize this webinar in this regard. So what I have to share with you in my speech, that is what is the condition of human capital in India and what are the opportunities and the challenges of human capital in India. These are some outlines what I have to go through entire my session, and one by one we can cover in this session. So first of all, we have to think what is the importance of that topic. As the previous speaker and inaugurator said, human being or person is a factor of production. And when we think about the factor of production, the rest of the factors of production are uh, 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 used for the production. But human is a person who have feeling, who have some emotions, and that way human or person become very important in this regard. Second important thing, when we think about the human capital, then that human capital is widely acknowledged as a crucial factor for I am not saying economic development, because we have to think about how we can grow the things in on the point of economic perspective. So second important thing what we have to think about the human capital, and that is human capital is again become important in context of employability, because sir was saying that about the unemployability. So in this regard, again it is become important. As you all agree with me, we are 1.4 billion people living in India. That is not matter. Matter is that how you are rather than how many, and therefore human capital become important. One of our well-known economists rightly said that a country is poor because it is poor. When we think about our country and the development of our country, why our country is poor? Poor because we are poor, and therefore that things, that situation we can see everywhere regarding the human capital, and therefore the think about the human capital again become important. As Takle sir rightly said that when we think about the ranking based on human capital of our country, and we can see that our ranking is there 116th position out of 174 countries. And as I mentioned on my slide, it is increasing day by day or year on year, no doubt. Even though there is some limitations, what we have to, why we are not reaching that much level of
other countries. So that way, that topic is becoming very important for this today's discussion as we have organized one day national webinar. So first of all, we have to understand the concept about the human capital. Human capital is a stock of knowledge, skills, and other personal characteristics embodied in people that help to them to productivity. So that way, human capital is become considered as a stock. What I previously said that we are 1.4 billion, but how many peoples are there that can be easily we can convert in terms of productivity. So that is the matter, and due to that we have to think about the human capital. Another things we have to understand create amongst us, and that is human capital is a accumulated skill and talent that a person learn in order to increase his or her success in life. When we think about the investment, and when we think about probably the investment in human capitals, within that we have to understand there are some formal aspect and informal aspect. When we think about the formal aspect, the formal education, what sir was saying that the early childhood education, formal education, educational system, training programs, what we are running in our country. Then, when we think about the informal investment, that is called as a on-job training and workforce. How many people we are able to convert directly in terms of workforce? Because sir was saying that there is a huge unemployment present in our country. So that way we should be successful to convert our people in terms of productive person. So that due to that, human capital is become very important to understand in our country. Then next important point what we have to remember, and that is in what way that capital is important in our country. So when we think about the human capital, the most probably it is effective to promoting the long-term economic growth and tackling the inequality in our country. So if you want to target our growth of our country, then first of all we have to think what type of human capital we have. If you want to tackle the inequalities in our country, again we have to think about that what type of capital we have developed during that period, and then we can think to tackle this problem. Might be that problem may be related to the growth or may be related to the inequality. When we think about the measurement of human capital, as sir said, there are some aspects based on we can measure the human capital. So when we think about the measurement of human capital, I'm talking about the measurement of human capital. Human capital we can calculate it as a mean year of schooling multiplied by the rate of return to education. Maybe that maybe linear, decreasing or increasing. Probably increasing log of that measurement may be considered as a quality education or good for our country. That measurement method or rod has been developed by the OECD, and therefore it is called as a new measuring rod of human capital. And based on that, what we have seen one index in the very second slide, what I have mentioned, India's ranking is 116th amongst the 174 country. So that way, that indicator or that measurement is considered as a solid empirically linked to the productivity at the country. Ultimately, when we think about the human capital, that should be resulted in terms of productivity of our country, and therefore that measurement is called as a solid empirical. When we think about the human capital components, these are the some 8 components what I have mentioned on the current slide: knowledge, creativity, training, ability, good health, judgment, wisdom, and creativity. So when we think about the knowledge,
knowledge gives some power about the thinking and creativity. If there is some need to sharpen their skills or sharpen their creativity, then there is a important thing we have to organize, and that is called as a training. Education and training create the ability among the peoples, and that people may be useful for our country. Again, as I said, how many peoples are there, it is not important. How they are, it is important, and that's why the health of peoples is become again important. As I said, we are 1.4 billion people in India, but when we think about the health wise, how many people are there which can use for the productive activities? So that way health again become a very important component uh, in the uh, capital, human capital. Judgment, when we create the knowledge, when we provide some training for our human, and based on that, if we check the what kind of judgment capacity is developed between that amongst that people, then we can realize how that peoples are useful to take a proper decision. Maybe that decision is related to the productivity, or maybe that decision is related to the living of standard. So that way judgment is becoming important, and judgment again gives the helping hand to create a wisdom among the people. So that way, after developing the wisdom, again we have to think about what type of creativity that peoples are generating for that country, and based on that, whatever 8 factors or components I have mentioned on this slide, this can be resulted in terms of productivity of that person. And therefore we have considered these are the some 8 components of the uh, capital, human capital. If we want to know the status of our human capital, as we are thinking about the India as a plan of country. So as I mentioned, the 8 factors, among about that, 4 or 5 factors I have mentioned, which I will deal with that. And these are, first is primary schooling, second is skill, employability, health, and life expectancy. Most of the factors covered by the principal Takle sir. So my job is become very easy for me. So now quickly we turn towards the understanding the status of our country. When we think about the literacy, or when we think about the uh, primary schooling numbers of our country, one important things I would like to mention at here regarding the primary schooling. Primary schooling is a key indicator of our Asian economic development. So that way we have to focus on the primary education, and we have to expand that education uh, from the last child. And when we think on the literacy, I have mentioned few graphs on the slide. And again, I have numbers with the vocabulary. And you can easily understand our literacy rate is going to increase. You can take that literacy rate amongst the female or male, both are going to increase, no doubt. And again, if we able to understand what type of uh, literacy we have achieved, it is numerical literacy. When, as I mentioned in the previous slide, if we think about the judgment, if we think about the creativity, if we think about the wisdom, then that literacy will not be useful for our productivity. So that way the numbers are going to increase, and the in an actually that numbers cannot be converted in terms of productivity. So that way, the if we think just about the comparison of the numbers, our literacy almost is increased up to 76%, and which is again we can seems it is less than the world average.
world average is there 77.72%. So that way we have a scope to do something regarding the increasing about the literacy. Second important thing, which is again very much relevant, and as I mentioned, it is the gateway of our economic growth, or not only the India, even whole Asian countries, and that is called as a primary schooling. So our primary schooling numbers is in year on year going to increase, and that is a good sign for our human capital. But when we think about the numbers, even though that numbers cannot be considered as a good number. As I mentioned, the primary schooling numbers is going to increase, but the ratio of teachers and primary student, it's again become a matter of our human development, because the number should be goes down and the teacher student ratio should be fall down, and then we can think about that is the good sign of human capital in our country. But as I mentioned on the slide, that number we can seems coming down, but it is not seems as compared to the world level. As I mentioned on the screen, world level teacher student ratio in primary schooling is almost 21.75 student per teacher. But in our country, if we take the numbers of for the year 2017, it is almost 32.75 students per teacher. So again, it is become a matter when we think about the human capital in our country. We have to do something, we have to give much emphasis to how we can reduce that number, how we can reduce the size of student per teacher. Then that teacher can be give some time, that teacher can be give more time to develop that student. So that way it is becoming important to understand the teacher student ratio about the schooling, basically the primary schooling, how that is good for our human capital. Next important thing become understand, and that is when we think about the schooling or enrollment of our schooling, then we have to think how many how much money we are going to spend on education, and that spending we have to understand in terms of percentage of GDP as well as the percentage of government expenditure. I have put the couple of graphs on the screen, and you can easily understand year on year we can see that the total expenditure as percentage of GDP is increasing, and last 2021 that expenditure was 4.62%, which is made by our government as compared to the in terms of GDP. But when we think about the total spending made by our government on the different parameters, then the expenditure on education again we can seems reducing year on year. Percentage of GDP, our educational expenditures we can seems increasing, but in terms of the percentage of government expenditure is going to decrease day by day, and maybe that is the reason of the bad quality or decreasing quality of our education. So this is one important thing I would like to share with you regarding the expenditure, or probably the government expenditure, which is basically very much important factor to nurture the human capital in our country. So in that way, we cannot proper direction. We have to think about it. Some of the others I have mentioned in tabular or table format, and based on that we can see that the female population which age is 6 or above the 6 years, their urban and rural
numbers I have mentioned at here regarding the literacy, who are going to attend the classes, or who are going to attend the school, and total number is 71.8% females in our country going to attend the school. When we think the total literacy of the amongst the women and men in the age group 15 to 49, which is considered as a workforce of our country, then we can see that 71.5% women are literate and 84.4% are men are literate. It means that rest of the 30% women and 15% male are not considered the part of our literacy, and there is a scope what we have to do something regarding the improvement of our literacy rate. When we think about the use of our knowledge, and one indicator I have mentioned on my slide, and that is called as a internet. Internet is not only the knowledge parameter, even though it is a parameter of our productivity. Nowadays, we can see number of ways are there which is useful to increase our productivity, and within that parameters, internet become very important. And due to that, the numbers of peoples are how many peoples are using or very good use of that internet. That is again become a matter of productivity. Hardly we can see that is 33.3% women are able to use successfully that internet, while 57.1% people men are using properly that internet for the productive purpose. I am not saying that internet using we are in terms of our mobile. I am talking about that use of internet in terms of productivity, in terms of generate the income or money. So that way, that is the situation or status of our country. Next indicator I have mentioned at here, which is again related to the health, and that is the mortality rate under 5 years. So again, that is not a good picture for us. Out of total 41.9 children will be alive up to their 5th birthday. So it means that rest of the 59 children we can consider that may be alive their 5th birthday. So that is not again good sign for the in our country in terms of human capitals, because if there is a mortality rate is high, it means that in the coming near future your young human power may be reduced, and that way that is not a good indicator for our human capital. Second thing I have mentioned regarding the delivery facilities which is available in our country, and you can see that out of 100, 8.6 delivery to happen in institutional base. The rest of the 12 deliveries, there is no availability for the institutional delivery facilities. So that way, that women are not able to acquire the facilities, which is maybe that may not be provided by the system, or may not be they are not able to acquire that facilities for them. So these are the both way we can consider that problem, but the problem is there. We have to overcome that problem, and we have to reach out that rest of the 12 ladies who are not probably using that facilities for their successful deliveries of the birth. Next, the women who are considered as anemic and men who are considered as anemic, because both are, as sir said, both are the part of our workforce, and then we have to think how that persons are anemic or women are anemic. Then out of the 118.7% women as anemic, and 16.2% men are considered as anemic. When we think about the workforce, this much people are not properly used in our productive activities. So that way we have to think how we can reduce numbers.
Again, I have mentioned the overweighted men and women's numbers on the screen, and out of the 124 women are overweighted, and while 22.9 men are overweighted. Both underweighted and overweighted persons will not be considered as a good signature of the capital. So means the body mass index number and the over obesity numbers, it will not be considered as a good sign of our human capital. So that way we have to think how the normal healthy life or normal healthy practices we can provide for our human being in our country. So that is the one condition we have to think on it. Then we have to think about the anemic women and men, and that numbers again, it's very alarming for us, which is not good for our human capital formation. So 59 women out of 100 almost considered as an anemic person, while 31.1 male will be considered as an anemic person. So these are the is the very giving some red signal regarding the human capital. Next, I would like to mention at here, which is very important in terms of human capital formation, and that is the life expectancy. So far, we have learned about the life expectancy only at birth. Means when we take birth, how much years we can survive, or how much possibility is there we can alive in the country. So that is called as a life expectancy at birth. You can easily understand or you can easily observe our life expectancy in terms of in comparison of 2000 and 2019. It seems increasing, but if we observe the worldwide life expectancy, then we can see that it is not that much less. So India's life expectancy was in 2000 62.1, and in 2019 it was 17.8. So it means the life expectancy of our country is going to increase by 6.68%. At that time, the worldwide life expectancy is increasing 6.52%. It means that by percentage wise, our life expectancy is performing well rather than well. Another life expectancy I have mentioned on the slide, and that is called as a healthy life expectancy. Healthy life expectancy at birth, it means that the average number of our years that a person would expect to live in full health from the birth. It means that there is a no disease, there is a no injury during the life, and that is called as a healthy life expectancy. When we think about the healthy life expectancy in our country, then we can see that it was 52.9 in 2000, and it is increased up to 60.3 in 2019. By 17.39%, it is going to increase. When at the world level, the numbers of that healthy life expectancy was 58.3 in 2000 and 63.7 in 2019. It means that 5.36% healthy life expectancy increase worldwide. Again, that way we are very much good. In terms of percentage change, we are good about the life expectancy at birth and healthy life expectancy at birth. So both are the sign, or both are the good sign for our human capital, because our life expectancy or healthy life expectancy seems to increase during the period. As sir mentioned, how many doctors are available in our country as a medicinal practices? The density of physicians I have mentioned in the slide, it was 12 in 2000, and it was become a 7.3 in 2019. It means that
the density of physicians is decreased by 5% during the period. It is again alarming sign for our country. Next, I have mentioned again that is related to the health issue, and that is called as a density of pharmaceutical personnel. How many pharmaceutical shops are available per lakh, per 10,000 person in our country? So in the year 2000 it was only 2, and in the year 2019 it's become 8.6. It means that the density of pharmaceutical personnel is increased by 6.6% during the year. Again, it is a very good sign. I hope it is a good sign of our medicinal practices. The one indicator is going to decrease and one indicator is going to increase. So there is a we can get some understanding what is the need we have to overcome that situation. Whatever parameters I have mentioned up to the previous slide, that parameters we have not considered in our country to calculate or to measure the human capital. But there are some organization who was try to organize some data based on that parameters and try to understand, try to calculate what is the size of human capital within their countries. And one prominent institutions I have mentioned on my slide, that is called Organization of Economic Cooperation and Development, which is the organization of 38 countries. We have tried to understand what type of human capital they have within their countries. And based on educational practices, they have collect some data and they have generated the understanding about the human capital in regards of reform. I am going to this slide particularly because recently we are going to a transition phase of educational reforms, and some of the reforms we are in piping, and some of the reforms we are already performed. So based on that, I have mentioned 4-5 variables at here, and that variables may be resulted in terms of GDP per capita growth in our country. So that data is basically related to the OECD's country. It is I have mentioned only for the create the understanding. For example, the increasing attendance for pre-primary education, if you have, it will be resulted within a 5 years, it will be resulted within a 10 years, or it will be resulted in terms of long year. The red line you can understand or observe how much contribution of the pre-primary education can be resulted in our GDP per capita. So that is a very important. Second, increasing full autonomy. If we offer the autonomy for our school, then how that can be resulted in terms of GDP, and it is almost more than 1.5% in terms of GDP. Decreasing student teachers ratio, what I was mentioning in the previous slide, if it is going to decrease, it means that by almost 1.5% it can be contributed in our country GDP. If the increasing age of the swimming, what I have mentioned as a life expectancy, your age is going to increase, then almost 1.5% or more than 1% your GDP can be increased by that variable. If you allow the fully qualified teachers in our institution, then that may be resulted in terms of our country's GDP in the long term almost 1%. So that way, these are the variables basically related to the education, but ultimately that can be resulted in terms of GDP growth. When we are going to transforming our educational Indian education, that way we have to think how we can minimize the teacher-student ratio, how we can offer the most autonomy for the educational institution, and important thing, how we can employ the qualified teachers in our school, college, and educational institutions. Then we can think about the condition of our human capital. I hope you have enough understanding about the
5 variables, and you are very good in that way to generate the understanding about the human capital. Next important thing, indicator I have to mention at here regarding the capital, human capital, and that is skill. As I mentioned, education is in terms of skill, and there are variety types of skill as I mentioned on the slide: cognitive skill, technical and vocational skill, social and behavioral skill. So that way, what is the status of our country I have mentioned on the slide, and you can observe our number, our global ranking is 68. Pakistan country is more good than India. Their global ranking is 64. So that way we have to think what is the necessary measures we have, number of measures we have adopted during the last couple of years. But even though there is a need to uh, give some step up regarding in that way, because there is a huge gap between the skill development or skill shortage in our country, as I mentioned on the next graph, and that is 64% in our country. There is a gap or shortage of our skill development. So that way we have to think about how we can create the skill among cognitive skill among the people, among the student, and how we can technically or vocationally better uh, in the world. The skill among our pupils or student. So that way there is a need to some policy measures or need to some uh, policy uh, implementation properly in our country. As I mentioned, national skill development scheme we have launched, and such type of n number of scheme we have launched. But I think it is my personal opinion, this scheme not properly implemented, because when we think about the skill development is not only related to the job create employability amongst the peoples. Even though we have to think about how that people can be transform one job to another job, how that person can be easily resign their job, and that can be useful for the another uh, productive. So that way we have to develop our skill among the peoples. We are thinking how that person can be useful as an employee. So that is not a proper skill development. So that way we have to think about the skill development of our country. When we think about the skill development of our country, then there are the number of challenges, because there is a huge gap in our country. 31%, as I mentioned, people are illiterate. So how we can provide the skill, that skill can be useful for the employment. So again, that is a matter. 2% workforce are probably considered as a formal vocational training, and 9% workforce can be considered as a non-formal vocational training. That is the part of our skill development. Rest of the people's even not included in the skill development. Next, problems or challenge of our skill development, and that is the skill mismatch. As I mentioned, most of the young populations belongs to the rural areas, and there is a no proper skilling system we have developed. So that way there is a mismatch in our country. Whatever job opportunities are available in our country, these are the traditional job opportunities are more, but we are providing the high level of skill development for them. So again, that type of jobs are not available in our country. So that is the lack of industrial faculty interaction. So what is the need of our industrialist regarding the skill, and what type of skill we are going to offer for our civilian? So that is the
Hello. Hello. हॅलो. कदम सर, म्यूट आहात आपण, आवाज येत नाही आपला. हॅलो. 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 ओके सर, आवाज येतो. हॅलो. हा येतो सर, आवाज येतो. येतो का? हो सर. सरांचं झालं ना? सर कदम सरांचं बहुतेक काही प्रॉब्लेम होतात. कदम सर, हॅलो. काय सर, कदम सर काय आवाज आहे? सर म्यूट आहे सर. अनम्यूट कर सर. त्यांना सांगा, कदम सर. सरांना सांगा ना. हो, फोन करायला सर. Yes. Thank you. Thank you very. Thank you. And extremely so sorry. There was a power problem. Hello. Hello. आवाज येतो सर, बोला सर. Sir, you are audible. Please continue, sir. Okay. Thanks a lot. So I am joining through my mobile, so I am not able to share my PPT, but I will continue whatever I have to say, right? So I was talking about the challenges of the skill development in India. So I have mentioned there is a huge gap between the skill development or the skill mismatch. So next challenges regarding the skill development, that is poor quality of skill training. As I mentioned, whatever skill development program we are going to implement in our country, that is only for implemented the sake of certificates, not to create the productivity or create the understanding amongst our people. Next challenge regarding the skill development, that is poor industrial linkages, because industry is not allowing the people to visit frequently visit in the industry, and they don't want to disturb their productive function, and due to that there is no proper linkages between the industry and the educational institutions. Next challenges before the skill development, that is lack of curriculum standardization. As sir mentioned, day by day our educational standardization is going to decrease, but it is important to how properly implement that standard education for our kids or children, then that can be resulted in terms of productive person in the long run. Next, I would like to mention what are the challenges for the building of human capital in our country. So few challenges I have mentioned in terms of that building of human capital. And the first challenge I would like to mention at here, building the human capital, and that is the education. As sir mentioned, we are going to implement the new education policy very soon, but there are the some problems, the proper implementation of that education policy, the plan of India, because we are not aware what are going to exact within our education system. So there is some kind of misunderstanding, even though that implementation of that system. We are very much aware, we are very much frightened about the implementation of that system, what will be happen in the coming years. But educational level we have to enhance, and properly we have to invest our primary, secondary and higher education in our country. Then we can think about the proper development of our human capital in our country.
next important challenge for the building of capital, human capital in our country, and that is health. As I mentioned, the density of physicians, density of pharmaceutical personnel, and the density of nurses what are available in our country, that is again very much alarming situation for our country. If we want to increase the proper health, because the health is a good sign of our efficiency and health is a very good sign of our productivity. So that way, the Ayushman Bharat national scheme, national health protection scheme, we have launched in our country. Integrated child development program we have launched in our country. But even though there is a need to reach out the last end person to give the benefits of that such type of health scheme or health plans. So that way there is a problem how we can give the proper health for our people. Next challenge for the human capital, and that is job creation. As sir said, jobless growth we are going to increase in our country, but we have to think how the persons can be employable in our country. So that way we have to promote the business interest and entrepreneurship among the country, so that can be create the employment opportunities in our country, and that employment opportunities will be grab all kind of labor forces in our country. So that way the World Bank some ranking for our country, and that ranking is considered as a doing easy of doing business index for the country is very good. So it is not only the limitation or opportunities for our country to give some job creation. Even though we have to think about how we can extend the startup program, make in India program, and self-employment program in our country. So that way, the near future, we have to think the job opportunities of our civilian, of our peoples. Next important challenge, how we can extend the urbanization of our country. As you are well aware about the 45% people are living in the urban areas, but rest of the 55% living in the urban areas. So whatever facilities we have provided in urban areas, that facilities we have to offer in our rural areas also. So their living of standard may be improved, and that living of that person can be useful for our productive activities. So this is the one important limitation what we have to extend up to our rural areas. Next, I would like to mention, and that is the low productivity of our country. How we can think about the increase the productivity of our labor force, workforce. That is again become a matter. We have to, when we have to think about the improvement of our productivity, then we have to think about the technology, because without technology we can survive in the current world. So latest technology, updated technology we have to install in our production line, and the person we have to develop, that person can be handled different or versatile of technology within that the production line. So that way we can improve the productivity of our workforce. Then the rate of returns to the education. So far, there is no system we have generated how we can understand, how we can measure the rate of returns to the education. But without that, we are not bypass the educational returns in terms of human capital. So if we want to properly understand the human capital status in our country, then educational schooling age numbers we have, but rate of returns out to the education we didn't have. So that way we have to generate the system how we can calculate the rate of returns to the education. So that is another challenge how which is related to the human capital of our India. These are some challenges I would like to mention. Due to the lack of time, I would like to mention what are the route ahead for the in terms of the human capital. We have a population demographic dividend
and that demographic dividend we have available up to 2056. So almost 37 years we can enjoy the benefits of that demographic dividend. But the policymakers, we have aligned the developmental policies in that regards. Then only that policy, that population dividend can be incorporated in terms of the, or we can encash that population dividend. Next important road ahead I have to mention, and that is the demographic transformation, which is very complex. As I mentioned, rural population and there is a urban population, but the problems of rural populations are very different than the urban population, and due to that, the skill development program, education training system, we have to perform, we have to build in that way. So rural student can be easily admit that things, even though the urban student will not be bored with that skill development program. So that way we have to tackle the demographic transition of our country regarding the skill development, educational implementation, and proper training. So these are the some road ahead I would like to mention at here for the proper implementation or proper human capital formation for our country. These are some things I would like to share with you regarding the human capital of India, opportunities and challenges. So with that, I will stop here. Before that, conclude my session. I'd like to thanks to the organizers who have called me as a resource person in this one-day national seminar and give me opportunity to say something about the human capital. There is a limitation as a person. What I have mentioned, it is my personal view. Maybe some other things may be related to the human capital. And so don't consider it is a whole picture of our human capital. It was my point of view. So I have mentioned that all these things in my capacity. So I would like to thank to the organizer, basically the Secretary sir, Kakade sir, who have given this opportunity, and thank you. Over to you, Kakade sir. धन्यवाद सर। बहुत अध्ययनपूर्ण मंतव्य आपका था सर। आपने ज्ञानवर्धक और यहाँ पर दी है। आपने ह्यूमन कैपिटल के मानव पूंजी के मुख्य स्रोत 3 स्रोतों पर यहाँ विस्तार से बात की है। पीपीटी जितनी अध्ययनपूर्ण और सुंदर थी सर, उतनी ही प्रस्तुति आपकी बढ़िया थी सर। आपके अध्ययन में गंभीरता, चिंतन में सूक्ष्मता और विश्लेषण में प्रौढ़ता यहाँ पर दिखाई दे रही थी। आपने न केवल समस्या को बताया, बल्कि उन समस्या के समाधानों का हल भी यहाँ पर बताया है। जो ह्यूमन डेवलप के लिए जिन बातों का जिक्र आपने किया, केवल मैं कहना चाहूँगा कि आपने न केवल जिक्र किया, बल्कि उसको विस्तार से रेखांकित भी किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल्य, इन तीनों बातों की आवश्यकता होती है। इस बात को आपने बड़े विस्तार से समझाया। शिक्षा में भी आपने प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार से महत्व देना चाहिए, उसको अहमियत देना चाहिए, इस बात को भी आपने बढ़ावा दिया है। आजकल जो कौशल्य के नाम पर कार्यक्रम हो रहे हैं, केवल दिखावे के लिए, केवल प्रमाण पत्र बांटने के लिए यह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, और न केवल उसके माध्यम से जो शिक्षा देनी चाहिए, जो कौशल्य बढ़ना चाहिए, इस बात को आपने बड़े गंभीरता से और बहुत सूझबूझ के साथ यहाँ प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर ये कहूँ कि आपका अध्ययन बहुत सूक्ष्म था, चिंतन भी सूक्ष्म था और विश्लेषण प्रौढ़ था, और कुल मिलाकर आपने जो यहाँ विषय प्रस्तुता के रूप में अपनी
भूमिका अदा की है वह बहुत ही लाजवाब थी और बहुत मायने रखती है। और निश्चित ही यहाँ जितने भी प्रतिभागी थे, अध्यापकगण थे, छात्र थे, वे लाभान्वित हुए होंगे, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूँगा। इसके बाद इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष मेरे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, जो पिछले लगातार 24 सालों से मराठी विषय का अध्ययन और अध्यापन कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से वे प्रशासनिक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सर एक लेखक, समीक्षक, प्रशासक, अध्यापक के रूप में मराठवाड़ा में ख्यात है। सर के संपादकत्व में पावर ऑफ नॉलेज यह पत्रिका प्रकाशित होती है। सर ने यूजीसी द्वारा दी जाने वाली मेजर माइनर दोनों प्रोजेक्ट कुशलता से यहाँ पर पूरे किए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि सर एक उत्तम लेखक, समीक्षक है ही, क्योंकि उनके 28 पुस्तकें, किताबें यहाँ प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही सर मराठी अध्ययन मंडल के सदस्य और मराठी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया हुआ है। साथ ही वे एक सीनेट सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। सर के शोध निर्देशन में लगभग अब तक 12 शोध छात्रों ने पीएचडी की उपाधि हासिल की हुई है और अभी उनके शोध निर्देशन में 8 शोध छात्र पीएचडी कर रहे हैं। सर ने अपने आप को इस काबिल बनाया जिससे हम प्रेरणा ले सके। मैं यदि ये कहूँ कि ह्यूमन कैपिटल का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर कोई है तो यहाँ मैं सर को कहूँगा तो ये अत्युक्ति नहीं होंगी, क्योंकि सर को हम देखकर सुनकर ही सीखते हैं। कम उम्र में इतना बड़ा कौशल्य और इतना सारा योगदान सर ने दिया है। इसीलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय समापन सर आप करें। आदरणीय सरकटे सर जी। हॅलो सर, आवाज येतोय? हॅलो, येतोय आवाज येतोय सर. जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कला व विज्ञान महाविद्यालय शिवाजीनगर गडी अर्थशास्त्र विभागाअंतर्गत आजच्या एकदिवसीय नॅशनल वेबिनार अंतर्गत भारतातील मानवी भांडवलाची स्थिती, संधी आणि आव्हाने या विषयावर आज सकाळपासून चांगल्या प्रकारचं विचार मंथन होत आहे। या विचार मंथनामध्ये आमचे अर्थशास्त्र विभागाच्या माध्यमातून आज जे उद्घाटक म्हणून आम्हाला वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिलेले आमचे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर धोंडीराम पवार सर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, त्याचप्रमाणे ज्यांचं अभ्यासपूर्ण आपण बीज भाषण ऐकलेलं आहे असे कला आणि विज्ञान महाविद्यालय लिंबाई चिंचोलीचे प्राचार्य, आमचे मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर दिनकर टकले सर, त्याचप्रमाणे आत्ताच की ज्यांनी पोटतिडकीने एक चांगल्या प्रकारे पीपीटीच्या माध्यमातून काही अपरिहार्य तांत्रिक अडचणी आल्या जरी असतील, परंतु एक चांगल्या प्रकारचं पीपीटीच्या माध्यमातून आम्हाला एक चांगलं एक बौद्धिक खुराक ज्यांनी दिलेला आहे असे आमचे मित्र डॉक्टर किशोर कदम सर, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड एससीबी कॉलेज कॉमर्स आणि सायन्स वुमन्स मुंबई, त्याचप्रमाणे या चर्चासत्रात सातत्याने
हॅलो. अर्थशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी काकडे सर आणि सर्व प्राध्यापक बंधू आणि भगिनी, भारतातील मानवी भांडवलाची स्थिती, संधी आणि आव्हाने या विषयावर आपण सकाळपासून विचार मंथन करीत असताना खरोखरच ह्या विषयाला इतकं महत्व कशा पद्धतीने आलेलं आहे हे आपण बघत आहोत. आणि म्हणूनच भारतातील मानवी भांडवलावरची स्थिती, संधी आणि आव्हानाच्या माध्यमातून मी अध्यक्षीय समारोप करीत असताना धोंडीराम पवार सरांनी की एक उद्घाटक स्वरूपामध्ये चांगले विचार व्यक्त केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे बीज भाषणाच्या माध्यमातून टकले सरांनीही चांगले विचार व्यक्त केलेले आहेत आणि कदम सरांनी. परंतु मला अध्यक्षीय समारोपाच्या माध्यमातून वेळ जास्त झाल्यामुळे मी थोडक्यात सांगेन की खरोखर भारतातील मानवी भांडवलाची स्थिती, संधी आणि आव्हानाच्या माध्यमातून सुरुवातीच्या काळापासून आपण जर विचार केला, सुरुवातीच्या काळात आर्थिक विकासाच्या विश्लेषणामध्ये देशातील नैसर्गिक साधन सामग्रीच्या उपलब्धता आणि भांडवल या घटकावर भर दिला गेलेला आहे असं आपल्याला दिसतं. परंतु तेव्हा काही देशांनी नैसर्गिक साधनांची फारशी अनुकूलता नसतानाही किंवा भांडवल मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असतानाही अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून आर्थिक विकास केलेला आहे असं आपल्याला एकंदरीत दिसतं. आणि म्हणून त्यातून मानवी भांडवल, मानवी विकास या घटकांना महत्व प्राप्त झालेले आहे. आणि मानवी विकास संकल्पनेचे अलीकडच्याच काळातील मूल्य 20व्या शतकाच्या 6व्या दशकात मूलभूत गरजा निर्धारित करण्याचा प्रयत्न आपणाला साधारणतः दिसलेले आहे. आणि म्हणून मानवी विकासात मनुष्याच्या समतांचा विकास अभिप्रेत आहे असं एकंदरीत एक ह्या सर्व अभ्यासपूर्ण जे विचार मांडणी केलेले आहेत, कदम सर असतील, टकले सर असतील, यांच्या अभ्यासपूर्ण विचारातून असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून त्यात श्रमशक्तीची सक्षमता, ज्ञान, कौशल्य, त्यांची सृजनशीलता, गुणवत्ता, विश्वास, मूल्य, अभिवृत्ती, अभियोग्यता इत्यादींचा अंतर्भाव साधारणतः होताना आपणास दिसतो. आणि म्हणून मानवी सक्षमताच्या विकासाबाबत मानवी भांडवल विकास दृष्टिकोन आणि मानवी विकास दृष्टिकोन असे दोन दृष्टिकोन आपणाला साधारणतः एकंदरीत आपल्याला दिसतात. कारण मानवी भांडवलामध्ये विकास दृष्टिकोन आणि मानवी विकास दृष्टिकोन असे दोन दृष्टिकोन सहज आपल्याला एकंदरीत दिसतात. आणि म्हणून असं मला म्हणावंसं वाटतं की मानवी विकास म्हणजेच अधिकाधिक उत्पादकता होय. आणि म्हणून उत्तम निरोगी आरोग्य, साक्षर, कुशल व जागरूक असलेला श्रम पुरवठा, उत्पादित भांडवल भल्यासाठी आवश्यक आहे. तेव्हा उत्तम शिक्षण, आरोग्य सेवा, योग्य आहारामध्ये गुंतवणूक करणे समर्थ आपल्याला एकंदरीत महत्वाचं आहे असं दिसतं. आणि म्हणून मानवी भांडवलात शिक्षण, आहार आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना या एकंदरीत या घटकांचाही आपण आज चांगल्या प्रकारचा विचार केलेला आहे असं एकंदरीत ह्या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून आपणाला जाणवत आहे. आणि म्हणूनच खरोखर एक चांगल्या पद्धतीने सर्वांनी मान्यवरांनी आज या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. त्या सर्वांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने पुन्हा एकदा अभिनंदन करेन. आणि पुढील काळातही आम्हाला आपण सर्वांनी असं सहकार्य करावं हीच आपल्याकडून अपेक्षा बाळगतो. आणि मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यशवंतकर सर. हॅलो यशवंतकर सर. हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है? बोलो. हाँ, धन्यवाद सर. पिछले लगातार 3 घंटे से सर आवाज म्यूट है. हेलो सर. हेलो सर. ओके. धन्यवाद सर. आपने इस
राष्ट्रीय वेबिनार का अध्यक्षीय समापन किया। आपके प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से ही ऐसे Very good afternoon to all the dignitaries and the participants we have joined this national webinar. Jai Bhavani Shikshan Prasarak Mandals, Arts and Science College, Swajinagar, Gadi, and the Department of Economics organizing one-day national webinar on the status of human capital in India, opportunities and challenges. First, I would like thanks to the inaugurator, Dr. Indra Pawar sir, the member of Management Council, Savitribai Phule, Pune University, Pune, and Associate Professor, the Department of Economics, Sir Parshuram Bhau College, Pune, for accepting our invitations and inaugurating the national webinar. He has expressed in his speech the role of human capital in the country. He also on the human capital and its importance in the economy. Then I express my sincere gratitude to keynote speaker, Professor Dr. Dinkar Takle sir, presently the principal, Arts and Science College, Chincholi, for his enthralling views on the concerned topic. He has focused in his keynote address on the growth populations, gender equity, regional disparity, and quality of education in our country. He also mentioned the school educations and the health facilities are very important for the formations of the human capital. He also mentioned in his talk elaborately the challenges and the opportunities. So I'm very thankful of him. Then on the behalf of my college, I extend a really hearty thanks to our chief guest, Dr. Kishore Kadam sir, the Associate Professor, Department of Economics, SNDT College of Arts and SCB College for Commerce and Science for Women, Mumbai. Kadam sir told us a detail about the concept of human capital and the components of human capital elaborately. Then I'm heartily thankful to our principal and very good academician, Dr. The chairperson of the today's national webinar, Professor Dr. Sadashiv Sirkate sir. Dr. Sirkate sir always support us to organize this type of webinar workshop. So I am very thankful of him. I express my sincere gratitude to Dr. Shivaji Kakade sir, the head Department of Economics, organize this beautiful webinar. I also am also grateful of today's anchor, the head of
Department of Hindi, Dr. Santosh Kumar Ishwanta sir. Then last, I am very thanks to those who have directly and indirectly participated in this national webinar, support this webinar. Then thank you, sir. Thanks to all. सर क्लोज करू का सर? हा सर, क्लोज करा सर.